What's up, everyone? Very good morning, and I hope I'm properly audible and visible, and I think I am. Yes or no? Yes, I'm properly audible and properly visible. So, very good morning. So let's start with what we are having today. Hello, Rishpurna. Yes, we missed like 2 3 days because I was in some emergency, but we are back, and I hope I'll doing it. I hope I'll be able to do it regularly. So let's not discuss much. Uh, मतलब, I decided I'll get some new things in our session. Right. थोड़ा बहुत ही सही आप चेकआउट तो करते ही हो इंटरनेट प्रॉपरली. राइट. सो मैं थोड़ा सा इंटरनेट की वो चीजें भी अपन अब डिस्कशन में लेके आएंगे. जैसे रिसेंटली जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनका एक स्पीच जो डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हुआ दैट इज गोइंग वायरल. So if you are having like interest in listening good speeches and having good references, make sure to follow that speech. He actually talked about that middle powers, middle economy, and their importance in the world order. And it was a great speech. पूरा दिन लाइक ट्विटर में भरा था वो स्पीच एंड इट वाज हैविंग गुड रेफरेंसेस एंड ही एक्चुअली शोड अ प्रॉपर लाइक मिरर टू his country and the other suppressor countries. है ना. मैं मतलब जेन्युइनली बोलूँ तो भाई के ऊपर आई है कि भैया अगर ग्रीनलैंड को ले लिया चाचा ट्रम्प ने देन ही माइट बी लाइक गोइंग फॉर द नेक्स्ट स्टेट ही इज टारगेटिंग कि भाई 51st स्टेट जो है ना वो उस पे आप जाएंगे कि इसमें कनाडा. तो ही माइट बी टारगेटिंग कनाडा नेक्स्ट. तो अभी जब सामने वाले को समझ में आ रहा है कि भाई साहब अपनी थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है देन ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट. यस रिशवन, इट इज सपोज टू टेक ओवर द लाइक द एंटायर social media. It was a very good speech without a doubt. Right, so you can follow that, and there are certain outlets in Banaras, and there are certain outlets in Noida. Yeah, right. And okay, like इतना बोल हो चुका हूँ मैं ट्रम्प से. एवरी डे आई एम ओपनिंग अ न्यूज पेपर और न्यूज वेबसाइट, न्यूज एप्लीकेशन, सोशल मीडिया. घुमा फिरा के ये चर्चा आ ही जाता है. राइट. एंड दूसरा जो सबसे ज्यादा आने वाला है वो है ये चल ही रहा है. खैर वो तो जब तक इलेक्शन चलेगा तब तक चलेगा. सो लेट्स गेट बैक. अगर आपको सच में अच्छा कुछ देखने का मन है तो आप उनकी वो सीरीज जरूर देखना. इट्स इट्स वेरी गुड. दो वो वही है कि अब जाके उनको ये रियलाइज हुआ है कि मेरे साथ प्रॉब्लम है. बट दैट इज नॉट सपोज टू हैपन. व्हेन यू वर लाइक when America was invading Iraq, you were happy. Afghanistan, you were happy. You destroyed Syria, you were happy. Now, when it comes to Europe, Western world, and like next time it might be Canada, तुम अब जाके थोड़ा सा डेमोक्रेसी का लाइक इंटरनेशनल सॉवरेनिटी का इन सब का आप क्या दे रहे हो. वो दे रहे हो, दुहाई दे रहे हो टेक्निकली. ओके, I'm not behaving like सास बहू serial, but that was a दुहाई. तो overall fashion made something that came out wrong time. You should have talked about it like 20 25 years back, but ठीक है. It was good speech. I hope people can learn something from that. You can follow it. Now let's get back to the important news segment. So सबसे पहले तो important news जो है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट, उनके जो पावर एंड इलेक्टोरल रोल्स हैं, पावर एंड इलेक्टोरल रोल, इस पे काफी डिटेल में बात की. लाइक अगर मैं लाइक सिंपली टॉक अबाउट इट, सो दे टॉक अबाउट द वैलिडिटी, द लिमिट्स ऑफ स्पेशल पावर इन सॉरी स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन and of the electoral by the electoral commission. They also talk about the EC has wide powers but not absolute. Yes, the institution is answerable to the power the citizen of India. उन्होंने काफी चौड़ी बात की. अपन बात करेंगे थोड़ा सा इसमें. राइट.
देन दे टॉक अबाउट आर्टिकल 24 एज वेल। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज थी जो कि आई आज की न्यूज में, दैट वाज फ्रीबीज वर्सेस द वेलफेयर स्कीम्स। सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन ऑन फ्रीबीज वर्सेस वेलफेयर स्कीम, इसके बारे में भी आज की न्यूज है। इट इज लाइक मतलब जो डिस्कशन, जो मेन पर्टिकुलर वो था, आउटकम था, जो टॉपिक था, दैट वाज समथिंग वेदर द इलेक्शन फ्रीबीज अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिस ऑफ इलेक्शन, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जो बिहार में देखने को मिला कि लाइक इलेक्शन के दौरान ही वो पैसे पहुंचा दिए गए थे। सो दैट इज समथिंग जो कि क्वेश्चनेबल है। वो जो पर्टिकुलर डिस्कशन है, सुप्रीम कोर्ट का डिस्कशन है, दैट इज अबाउट द रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन टू अट्रैक्ट वोटर्स, right? Younger voters, welfare schemes, constitutional obligation under the directive principle of state policies, डीपीएसपी। जो वेलफेयर स्कीम है वो डीपीएसपी वेलफेयर स्कीम प्रमोट करता है, ना कि फ्रीबीज। फिर आर्टिकल 38 39 का जो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है उसकी बात थी। आर्टिकल 282 द पब्लिक एक्सपेंडिचर, उस पर भी उन्होंने बात की। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, right, which says distributing money is a corrupt practice, whether like this will be applicable at that particular time or not, इसकी पे भी डिस्कशन किया। सो इट वाज अ गुड पर्टिकुलर न्यूज। अगर आप फॉलो करते हैं लीगल न्यूज तो मेक श्योर कि उसको फॉलो करना। आई थिंक दिस कैन बी वन ऑफ द गुड टॉपिक टू आस्क इन क्लैट। द नेक्स्ट वन इज पुलिस गाइडलाइंस। यस, पुलिस मीडिया ब्रीफिंग guidelines. Yes, Supreme Court of India again directed like state to have a proper police media briefing guideline. Yes, for like with proper manual, they just asked them to create a proper manual within 3 months, so that जो fair trial है वो चले. I mean, have you seen the media trial going on these days around the country? For example, हम ले लें, एक बहुत बड़ा एग्जांपल है सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था, right? Yes, a very talented, one of my favorite actor. He committed suicide during the COVID year. And उस टाइम पे मीडिया ने क्या किया था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। इट डजेंट मैटर तुम 18 साल के हो, 19 साल के हो, 17 साल के हो, 16 साल के हो, बट यू मस्ट हैव रिमेम्बर देयर आर मीम्स फ्रॉम दैट एरा जो आज भी हमारे पॉप कल्चर का पार्ट है। You will agree, like if you are agree, you are welcome to the chat box. If you don't agree, then you need to increase your meme knowledge. Right. So the fair trial है आर्टिकल 21, right to life, dignified life and liberty, उसके लिए right to privacy and presumption of innocence, और जो वो होता है प्री ऑफ गिल्टीनेस, इन दोनों के ऊपर जो है ना उन्होंने बात की। इट वाज इट्स अ वेल डायरेक्टेड, वेल नीडेड। देन द नेक्स्ट न्यूज वाज राजस्थान डिस्टर्ब्ड एरिया बिल। यस, राजस्थान डिस्टर्ब्ड एरिया बिल। सो द थिंग इज कि देयर इज अ न्यू लॉ जिस पे डिस्कशन चल रहा है, to restrict the property transfer in community in the sensitive areas. Uh, the idea behind this is if there is an immigrant, तो बाहर से आया आदमी है जो वहाँ की लोकल प्रॉपर्टी वगैरह वो करना चाहता है, खरीदना चाहता है, तो दैट प्रॉपर्टी शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड, समथिंग लाइक दिस, राइट। एंड देयर इज अ डेमोग्राफिक इम्बैलेंस जो कि जिस पे वो बात कर रहे हैं, दो इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड लीगल टर्म। And they also talk about it's a potential violation of Article 14, right, uh, right to equality, and Article 19(1)(f, that is property via Article 300A। तो उन्होंने काफी कुछ ऐसी बातें की हैं जो वहां पे है डिस्कशन को लेके। Rish Padna, very good if you are out of social media for a quite while, like that's good। मैं तो उस टाइम पे 15 साल का ही था, बट आई स्टिल रिमेम्बर दोस मीम्स। यस, आई विल कम ऑन यार, वो मीडिया ट्रायल सुशांत सिंह राजपूत, अगर सच में लाइक ईश्वर करे, महादेव करे, जहां पे भी वो है वो खुश रहे, बट अगर सुशांत सिंह राजपूत देख रहे होते सच में जो सोशल मीडिया मतलब जो सोशल मीडिया में हो रहा था, जो हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हो रहा था इंडिया में, तो वो आदमी दुखी होता उस चीज को लेके, बहुत बहुत ज्यादा दुखी होता। सो लेट्स कम टू द मेन न्यूज टुडे। सबसे पहले
Election Commission discretion during the SIR is not unregulated authority, says Supreme Court. So what exactly like उनका ये कहना सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है उसकी बात करें तो they are saying कि if there is an institution right वो भी institution like Election Commission of India and they think that they have absolute power on certain particular thing without answering to the common people, the citizen of India, they don't have that kind of authority. Every single authority should have that particular, what we can say, responsibility that should be answerable to the people. So, court takes off EC for deviation and says revision must be in line with norms, right? Special revision may involve serious consequences in the civil right of a person who's already a voter. So why should we not expect you, the election commission, to have a procedure that is transparent? So if you are making a list, जिसमें आप voters के नाम डाल रहे हो, and you said कि you are removing this X person, right, from the list, you must give an answer and explanation to the people why you removed the name of that individual from that list. Yes. The problem, the thing is, ki what is the good discussion out of it is कि you don't have absolute power under the Article 324. You must actually give answer to everyone. So उनका यही कहना है कि you might have authority, but that's not absolute authority. इलेक्शन कमीशन ने जो क्या कहना चाहिए बंगाल वाले केसेस में मैंने इंस्टेंट पे ये बात करी है कि लॉजिकल डिसअपेरेंस वाज फाउंड इन वेस्ट बंगाल इलेक्शन right? Discrepancies are found in West Bengal electoral roll, which include the two electoral found with more than 200 children and etc. etc. तो उनका ये कहना था कि yes, we found some discrepancy, that's why we creating it. और उसके लिए भी उन्होंने आंसर नहीं दिया था. So that is what somewhere going on. SIR पे हमने बहुत लंबी चौड़ी बात कर ली है. So जैसे जैसे जो evolution जो डेवलपमेंट होता जाएगा केस में हम डिस्कस करते जाएंगे. We're not going to waste a lot of time. Then the good news, multidisciplinary team of expert to define the Aravali. Remember that particular event जिसमें ये बोल दिया गया था कि Aravali range में, which is actually the oldest mountain range in India, if any particular mountain part which is not more than 100 meter, right, it will not be considered as the mountain. It will be considered as rock. Oh, hello, Daksh. Uh, it's good. Okay. The losses are losses, but have to back to work. And let's not discuss personal thing in the public platform. चलो आते हैं. So उन्होंने ये बोला कि any particular part of the Aravalli which is not more than 100 meters, we will not consider it as a mountain. And I have seen such like after such a long period कि public जो है उसने actually outrage किया. They came on the road, they came to the court and they were like, this is wrong. This is going to harm Aravali and the entire ecosystem. There were two parts that was divided. एक part define कर रहा इस definition को agree कर रहा था कि इससे काफी कुछ help हो सकती है. There is a part who understand कि भाई इससे नहीं होगा. So finally, like the Supreme Court of India have a team, right, decided to help define the Aravali range and draw a roadmap for permissible activities, including the possibility of regulated mines as one of the oldest and ecological sensitive mountain system in the world. So, what exactly is द स्टोरी कि ये एक रेसिडुअल माउंटेन रेंज है काफी पुराना फॉर एग्जांपल हिमालयास को हम द न्यूएस्ट माउंटेन या यंगेस्ट माउंटेन कहते हैं स्पिल इन फॉर्मेशन प्रोसेस Aravalli is that particular mountain which is oldest in the world, actually one of the oldest ecosystem. So they want to have a team of different areas और ये जो होंगे वो अपने अपने एरिया के एक्सपर्ट होंगे. They will talk about two three basic things. So first thing they will go to talk about what can be the definition of Aravali. Just say, for example, they said ki anything which is not having a 100-meter height, we will not consider it as Aravali. Right. Second thing, they are going to talk about the permissible activities. Yes.
Permissible activities, कि what kind of activities can be done? Like for example, एडवेंचर का पार्ट हो, क्या हम उसके साथ कुछ और पर्टिकुलर चीजें कर सकते हैं, उसमें रेगुलेटेड माइनिंग कर सकते हैं, राइट? एंड अंटिल देन सुप्रीम कोर्ट ने जो माइनिंग लीजेस हैं उनको अभी के लिए बंद कर रखा है. यस, दे हैव फाउंड लाइक कि ऐसा बहुत सारी चीजें चल रहा है, और एलिगेशन के डेफिनेशन के कारण कुछ और चीजें स्टार्ट होने वाली थी. दे हैव होल्ड ऑल ऑफ देम कि भैया पहले लेट द टीम डिसाइड व्हाट इज लाइक सपोज टू बी डन, एंड उसके बाद फिर हम वो करेंगे. तो उन्होंने ये भी किया है कि जो माइनिंग लीजेस हैं उनको भी अभी क्या कर रखा है, होल्ड किया हुआ है. तो दैट इज right, good particular step. So this was a development from the Aravallis itself. Yes, come on. I have faith in my judiciary. Like कोई कुछ भी कहे, कैसा भी कहे. Yeah, we are a bit slow in our process, but that is also important. जिससे हम हर particular case को properly justify करें, discuss कर पाए. But in certain cases थोड़ा लगता है कि यार सामने दिख रहा था. But I believe in my judiciary. Right? Hmm. नहीं यार, आप come on. I'm not sure why the people are like still the government is still not acting, but मुझे तो ऐसा लगता था कि if this is the oldest ecosystem, oldest mountain range in the world, why it's still not a kind of heritage for us? हाँ, मतलब हमारा जो नेचुरल हेरिटेज है, सोशल हेरिटेज है, जो ओवरऑल मॉन्यूमेंटल हेरिटेज है, हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं. तो why not protecting this? So अब तक क्यों नहीं हुआ? I'm still question, like in question. So खैर, let's come back. Freebies, different from investing in welfare scheme for the marginalized, says Supreme Court. इस पे हम लंबी थोड़ी बात करनी चाहिए. ठीक है. Yeah, like I had one particular discussion with one of my gurus, and he is an expert, political analyst, public policies को बहुत अच्छे से जानता है. And he was like, कि let's say कि there is a scheme, है ना, जो कहती है, let me give some cool name, right? Uh, Lovely Behna. Right. Yes, I cannot take the original name. So yeah, and we said कि हम under this scheme that there is a state government, state का just कुछ नाम सोचते हैं, that is मध्यम प्रदेश, मध्यम Raj. Okay, so Madhyam Raj decided to introduce a new scheme, that is Lovely Behna, and they said कि we are going to provide 2500 rupees of financial help to all those particular ladies जो कि हमारे यहाँ एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर तबके से फाइनेंशियल सोशल इन सारी चीजों के उसमें जाता है. सो लेट्स से ऐसा करते करते हमारे पास 10 लाख के आसपास क्या हो गई, लवली बहनाज हो गई, एंड उनके अकाउंट में हर महीने 2500 जा रहा है. सो 2500 इन पर्टिकुलर 1 year. ओके, I'm not talking about like anything, but in 1 year that will contribute like 30,000 rupees. ओके, एंड इससे स्टेट की जो पर्टिकुलर ट्रेजरी है, दी अकाउंट है, उसको क्या रिटर्न मिलेगा? दैट इज जीरो. बट ऑन द अदर हाफ, इफ आई लाइक आइडेंटिफाई 10 lakh of those females which actually can be part of a different scheme in which we are going to give them a 10,000 rupees worth of let's say a skill development program, yeah, skill particular development, whether that is small scale skill development. They are not well educated, so उनको सिलाई सिखा दी, sewing सिखा दी. We teach them how to make disposable glasses, disposable bowls, disposable cups, and some other small businesses. And then I gave them 10,000 rupees worth of machineries to start their business, and 10,000 rupees worth of raw material. And then I decided कि whatever you are going to produce from your local machinery, the government will buy it, and then they will distribute it to the local vendors. Right?
So is this going to help the state getting huge amount of revenue, पैसा, and it won't be a scheme जिसे आप 5 साल 10 साल 50 साल चलाओगे, right? It will be a one-time scheme. You are investing one time and you started generating the revenue. It will help those particular families which can have like their level up the living standard and some other thing. But if you'll keep giving the freebies, ये थोड़ा सा treasury के ऊपर, ये थोड़ा सा खजाने के ऊपर क्या हो सकता है, issue हो सकता है, right? Uh, Same with the reaction according to the reports, 20% need ration, 56. But वो छोड़ो, in Haryana there is an exactly model, but for SC, there are particular places. It's not just one particular state I'm talking about. To attract the females, like चाहे whether that is the Delhi government which who decided to go for free travel for women, whether that is Andhra, whether that is UP, MP, Bihar. Abhi recently Assam has announced such kind of scheme, right? So I don't have problem with helping those people who need help, but helping is that particular help is supposed to be in that particular manner in which uh, they can actually become what we can say self-reliant, जिसको हम आत्मनिर्भर कहते हैं. So yes, there is particular issues जिस पे काम करना था. And Supreme Court ने seen नहीं कहा. Freebies different from investing in the welfare for the marginalized, says Supreme. Why is there no dedicated diversion for revenue surplus for development purpose, which would further the constitutional idea for the inclusivity through the free medical care and education for the poor? अब क्या क्या चीजें हुई हैं, जो रेशनल फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है टू गेन द इलेक्टोरल व्हाट वी कैन से पर्पस, इसको जुडिशियल एग्जामिन करने के बाद क्या चीजें हुई हैं, मैं कुछ पॉइंटर्स के साथ बात करता हूँ. ठीक है. सो वेलफेयर वर्सेस फ्रीबीज इसकी डिबेट थी. तो जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत थे, ही हैज मेंशन्ड like they drew a clear distinction between the like slumping public money on irrational freebies and investing in welfare scheme for the marginalized people. They said the court had clarified that free medical care and education are development investment, and that further the ideal of inclusivity. 2013 की एक जजमेंट को भी रिकॉल किया गया था, जहां पे उन्होंने बताया था कि प्रायोरिटाइजिंग पिटीशन सीकिंग द रिकॉल ऑफ 2013 Subramaniam Balaji decision, which previously held that pre-poll promises did not constitute corrupt practices under the Representation of People's Act. But pre-poll promises, not money, right? Yes. So उनके साथ क्या क्या चीजें थी? सबसे पहले दे टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट. इसकी बात की इन्होंने इकोनॉमिक इम्पैक्ट कि what are going to be the economic impact if you keep doing this. This says there is a huge concern about the large scale freebies using from the taxpayers' money that could lead state toward the bankruptcy. उन्होंने सीधे इस बात पे फोकस किया कि भैया टैक्स पेयर के पैसे का टेक्निकल यूज जो है वो डेवलपमेंट में होना चाहिए, फ्रीबीज में नहीं होना चाहिए. 2015 की एक बेंच 2025 में बेंच जो है उन्होंने ये भी बात करी थी इसी चीज पे कि excessive freebies such as cash transfer and free ration were making people unwilling to work, potentially creating a class of parasite. Yes. So, ये कहना था कि there are people who need it. They might not have that sort of physical health. They might not have that sort of financial help. There are schemes जो already हैं उनको help करने के लिए. जो extra cash distribution है, cash transfer and free ration है, that is not going to help them. We are supposed to have a proper scheme, proper framework to develop them. थर्ड उन्होंने बोला कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनका जो स्टेट रिसोर्स मैनेजमेंट उनको क्रिटिसाइज किया. The fund crunch of for the judicial salaries, land acquisition, but continue to launch multi-billion rupees schemes for the freebies. यस, उनका कहना था कि हमने देखा है कि कई स्टेट में इसलिए भर्तियां नहीं हो रही हैं जुडिशियल पोजीशंस पे या अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, बिकॉज यू सेइंग यू डोंट हैव मनी, बट you keep spending billions of rupees on this kind of schemes so that you can win the election. That is again a wrong thing.
What, uh, that is what they are saying. If I'll invest these particular things, come on, think about it. Think about that one person who started generating revenue. They started selling their produced good to the government. They started selling, and government will get money back, right? तो yes, जो भी बातें हो रही हैं, है ना? उनमें से हम्म, ठीक है। सो द प्रोसेस इज कि क्या पर्टिकुलर चीजें जो है यहाँ पे डिस्कशन के लिए आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज, राइट, इट्स टॉकिंग अबाउट द सोशल जस्टिस, राइट। एंड सोशल जस्टिस में ये नहीं होता कि हम किसी के साथ क्या करें, डिस्क्रिमिनेशन करें। इट इज ऑल अबाउट कि हम सारी की सारी कम्युनिटीज को, सारे के सारे पार्ट को क्या करें, धीरे धीरे की ग्रुप कराएं। यस, अनडाउटली देयर इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी जो इतना कॉम्प्रोमाइज है कि उन्हें फाइनेंशियल हेल्प लगती है रेगुलर बेसिस पे, बट दैट डजंट मीन कि आप इलेक्शन वाला जो है वो पार्ट उठा के क्या करें, इलेक्शन के पहले एक स्कीम लॉन्च करें, उससे डायरेक्ट पैसा वो करें, एंड दैट इज नॉट समथिंग जो कि गलत है। ओके, उन्होंने कुछ और भी पर्टिकुलर चीजें वो की जिसमें उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात की, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में है कि जो पहले प्रॉमिस किए जाते हैं वो करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं माने जाएंगे, बट ट्रांसफरिंग मनी दैट इज समथिंग जो अभी क्वेश्चनेबल है। सो उन्होंने कुल मिला के जो पर्टिकुलर चीजें की हैं, उसमें जो अलग अलग आर्टिकल्स हैं, अलग अलग पर्टिकुलर चीजें हैं, उनको क्वेश्चन किया हुआ है। यस रघुवीर, यू आर वेलकम। अच्छा, आई एम टेलिंग रॉन्ग, आई थॉट यू आर डिस्कसिंग विद द दक्ष। Okay, you're welcome. I'm reading your chat box, like chat. So this is something जो कि डिबेट में रहा भी है। मतलब अगर तुम थोड़ा बहुत भी सोशल मीडिया फॉलो करते हो, तो if you are in Twitter or any particular other social media, you have seen these kind of debates कि whether that is supposed to happen or not. The good thing is कि people started discussing about it. The court is properly discussing about it. So let's hope for the best. We get some particular good debate and good outcome. क्योंकि प्रॉब्लम तो होती है। चले आगे बढ़ते हैं। एंड वन न्यूज कि भैया जो अमृतपाल है, राइट, यस, जो खंडू साहिब एमपी अमृतपाल सिंह है, he had moved to Punjab and Haryana High Court for like parole to attend the parliament session, budget session especially, राइट। एंड इनके बारे में बहुत लंबा चौड़ा वो हो चुका था, ही इज अ प्रो खालिस्तान लीडर, क्या क्या चीजें हुई थी, किस तरीके से अरेस्ट हुआ था, इट वाज अ फिल्मी सीन। तो वो काफी पुराना केस है, लाइक टू टेक, उसके ऊपर एनएसए लगी हुई है, एंड लाइक बहुत सारी चीजें, बहुत 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 सारी चीजें जो है वो चली थी। देयर वाज सीरीज ऑफ इवेंट्स उस टाइम पे न्यूज में थी, राइट। एंड उसके बाद जो है वो फिर भी इलेक्शन जीत जाता है। तो अभी वो जेल में ही है एंड ही वांट अ पैरोल। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कि पैरोल मिले ना मिले। Let's discuss this particular thing. Rajasthan cabinet clears the bill to maintain the demographic imbalance in the disturbed areas. Rajasthan cabinet approved the draft of, मैं आपको बताता हूँ, Rajasthan prohibition of transfer of immovable properties and provision of for protection of a tenant from eviction from the premises in the disturbed area Bill 2026. It's modeled after the existing legislation in the Gujarat. The bill aims to prevent the distress sale of the property and address the demographic imbalance in the area prone to communal tension. Yes. So उनका सीधा कहना है कि this the bill will actually give authority to state government to declare an area as a disturbed area, एंड वहाँ पे प्रॉपर्टी का जो पर्टिकुलर सेल होगा या एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जो मूवमेंट होगा, उस पे ये नजर रख पाएंगे। और अगर लाइक कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी के बिना पूछे तो उसको नल एंड वॉइड भी करेंगे। सो लेट्स डिस्कस सम की प्रोविजन फ्रॉम द बिल। सो सबसे पहला तो इन्होंने एक पर्टिकुलर पार्ट रखा है जिसमें एक एरिया को डेजिग्नेट किया जा सकता है,
कि whether that area is a disturbed area or not. So उसमें लिखा हुआ the state government gains the authority to declare the specific localities as the disturbed area for the period of 3 years, which can be extended or reduced based on prevailing condition. So they got an authority to declare any area as the disturbed area for the 3 years. उसको आप कम ज्यादा कर सकते हो depending upon the reports जो भी आ रही हैं. Second, the restriction of a property transfer. Yes, once the area is notified, any transfer of the immovable property without prior permission from the competent authorities, let's say district magistrate, yeah, something like this, will be considered null and void. So if somebody is trying to buy a property and they are like in the property is in the disturbed area and they are not like getting permission or they are not notifying the local DM or local authorities, it will be null and void. The third one is like criminal penalties. Yes. So violating the transfer restriction will be cognizable and a non-bailable offense carrying a prison term of 3 to 5 years and with fine. And the last one is कि उन्होंने इस particular bill को रखा हुआ किसके लिए? Protection of local resident और tenant. तो उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि लॉ जो है वो लोकल रेजिडेंट परमानेंट रेजिडेंट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बोले द इंटेंशन इज टू प्रोटेक्ट देम राइट एंड लाइक जो लोग हैं जो फोर्स करके प्रॉपर्टीज वो करते हैं उनको बचाने के लिए प्राइजेस जो है उसको भी रेगुलेट करने के लिए कैसा नहीं हो कि देते जाओ वाला सीन हो अब ऑपोजिशन मतलब इसमें जो रेजिस्टेंस है उसकी अगर बात करें तो सबसे पहली चीज जो है वो बात करते हैं पब्लिक इसकी आर्टिकल 14 जो लोकल अपोजिशन है राजस्थान सरकार की कांग्रेस पार्टी उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया है इज दैट वी स्ट्रांगली अपोज द बिल and we calling it this is an unconstitutional bill. It's a direct violation of right to property, Article 300A, and right to equality. यस जो गोविंद सिंह है जो स्टेट प्रेसिडेंट है उन्होंने इससे ये बोला कि गुजरात मॉडल टू क्रिएट सोशल स्क्वाड उन्होंने फॉलो किया हुआ है जो गवर्नमेंट है डेमोग्राफी का जो पर्टिकुलर सीन है तो उसमें उन्होंने ये बोला कि देर इज एन इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग एंड देर इज अ चेंज इन डेमोग्राफिक प्रोफाइल तो हमें ये करना पड़ा एंड जो भी है 2026 के सेशन में ये पर्टिकुलर बिल जो है मोस्ट प्रोबेबली टेबल्ड है और वो चीजें मतलब पास हो सकती हैं जो भी है तो ये पर्टिकुलर बिल यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस के लिए आ रहा है कि whether this particular thing can be happen or not. On the other half, the central government has such kind of bill not for the property but for the disturbed areas in which the government or intel अगर government central government को मिलती है कि this area is problematic वो वहां को उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया मार्क कर देते हैं एंड वहां पे आसपा एंड अदर फोर्सेस मतलब आसपा जैसे वहां लग जाता है फोर्सेस जो है उनको कुछ अलग अथॉरिटीज मिलती है राइट तो ये पर्टिकुलर चीज होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट इज आल्सो मेकिंग सच काइंड ऑफ लॉ फॉर द प्रॉपर्टी ट्रांसफर नाउ नेक्स्ट SC asked center Delhi to submit an action plan on curbing the air pollution. Let's hope for the best. They had a plan. They have a plan. They put a plan in front of government, like Supreme Court, and Supreme Court actually talks logically about the pollution. क्योंकि दिल्ली पोल्यूशन जिस तरीके के मेरे दोस्त लोग बताते हैं अनबेरेबल आई हैव सम फ्रेंड हु स्मोक्स एंड दे कैन आल्सो बी लाइक नहीं भाई ये नहीं हो पा रहा है राइट सो प्रॉब्लम तो है वहां पे moving on again let's come back to some news bad news is so the churches हैं they raise an alarm over the attacks on Christian in India you have seen कि भाई क्रिसमस के टाइम पे क्या हुआ था राइट तो वो उन्होंने यही बोला कि वट एवर इज हैपनिंग कि चर्चेस में जो लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं उनके लिए देयर वर स्मॉल वेंडर्स हु वर सेलिंग सांता क्लॉज ड्रेस एंड कैप्स वगैरह उनके लिए तो ये जो पर्टिकुलर वायलेंस हुआ है दैट इज समथिंग जो कि नहीं होना चाहिए राइट तो उन्होंने क्या किया बीजेपी ने खुद अपने उस तरफ से जो पर्टिकुलर क्रिश्चियन कम्युनिटीज है उनको अप्रोच किया जो लोकल गवर्नमेंट है एंड दे वांट कि भैया इस तरह की चीजें कम से कम हो
Yeah, definitely, definitely. Pollution problematic तो है. Now moving on to the next one. False marriage promise is not a criminal, like promises is not criminal if relationship fails, says High Court. Yes, जो भारतीय न्याय संहिता है, which criminalizes the sexual intercourse by employing the like what we can say in like by the promise of marriage or something like this. उनको उन्होंने बोला कि भाई ये criminal offense नहीं हो सकता. उनका सीधा ये कहना है कि there were people who knows कि फ्यूचर किस तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिव में जा सकता है, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए, और इस पे उन्होंने डिबेट जो है जारी रखी. नाउ नेक्स्ट, जो तेलंगाना सीएम है, दे आर बिकम लाइक वर्किंग ऑन अ रूट मैप टू मेक इट अ $3 trillion इकोनॉमी, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट इट इन द Davos, that is World Economic Forum. There are a lot of people who are talking a lot of thing in Davos. इंडिया से जाने के बाद कई सीएम्स हैं वहां पे, so this news might be in your social media और मीडिया न्यूज जो भी है. लेट्स कम बैक टू ट्रम्प. भाई गाजा का प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रहा. गाजा इज अ लाइक आई एम नॉट श्योर. गाजा गाजा जिस तरीके से प्रॉब्लम है वो बहुत 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 प्रॉब्लम है, राइट. सो भैया चचा ने एक पीस बोर्ड बनाया हुआ है, जिसमें इंडिया को बुलाया, इसराइल को, यूएई को, सऊदी अरेबिया को, कई कंट्रीज को इनवाइट किया है, जिससे गाजा में पीस लाया जा सके. जो वेस्टर्न पर्टिकुलर वो है पार्ट है वेस्ट एशिया का, उस पे पीस लाया जा सके, द टू स्टेट सोल्यूशन उसकी बात की जा सके. हम बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, राइट. गाजा इज अ प्रॉब्लम लाइक जो लास्ट 2 ढाई साल से 3 साल से हो रहा था. नोबडी टॉक्स अबाउट इट. यस. एंड जो अभी हो रहा है उसमें एवरीबडी इज लाइक टेकिंग क्रेडिट, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है. तो खैर ठीक है, बहुत ज्यादा वो नहीं, बट हाँ, पीस प्लान है. लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सफरिंग थोड़ी सी कम हो जाए. हाँ. SC tells states to frame a policy on police media briefing within 3 months. यस. सो भैया पुलिस मीडिया ब्रीफिंग में क्या क्या चीजें होंगी, इसके लिए उन्होंने क्या किया, स्टेट्स को ऑर्डर दिया हुआ है कि आप एक मीडिया ब्रीफिंग के लिए गाइडलाइन जैसी ये पॉलिसी जो है उसको फ्रेम करें. So what are the main particular direction that is being given? सबसे पहले द 3 मंथ डेडलाइन कि भैया 3 साल 3 महीने के अंदर आपको ये बनानी है, राइट. Second one is model manual. Court mandate that state use a police manual for media briefing prepared by the senior advocate Gopal Shankaran Nair for their policy. So इन्होंने एक reference भी दे दिया है. And Supreme Court also had this particular thing कि 60 page manual should be officially in the public domain, कि भाई ये चीजें होनी चाहिए. जो कोर प्रिंसिपल है जिसमें उन्होंने बात की हुई है वो ये it focus on rights compatible and investigation safe framework. Yes, that is one thing जो कि बहुत जरूरी है. Rights compatible investigation safe framework. This had a kind of what we can say balance, जिसमें एक इंडिविजुअल जो कि अक्यूज्ड है उसके राइट्स जो हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, और जो सेफ फ्रेमवर्क इन्वेस्टिगेशन का वो भी कॉम्प्रोमाइज ना हो. तो ये उन्होंने सबसे पहले बात रखी. सेकंड, they need to prevent the harms, the incorrect rumors, public outrage, public media trial, and the objective that is of investigation is to find out whether the person is guilty or not. वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. तो इट्स अ बहुत पर्टिकुलर थिंग. नाउ टू थ्री मोर थिंग. सबसे पहले तो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन की बात की कि एक सेफगार्ड होता है जिसमें आप आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते ना विक्टिम की, स्पेशली इन केसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एंड इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन, राइट. क्यूज के साथ भी सेम पर्टिकुलर चीज है. Second, the manual also like they gave a proper thing for the leaks. उनका ये कहना है कि there should be no unauthorized interview or the leaks by the police personnel
that should be treated as misconduct, subject to a disciplinary action, and even persecuting the breach of official secrecy. So उन्होंने secrecy maintain करने के लिए वो किया मीडिया ब्रीफिंग कॉल मतलब इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो मीडिया ब्रीफिंग कॉल है दैट शुड हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन ट्रेन्ड बाय द ट्रेन्ड स्पोक्स पर्सन ऐसा नहीं कि रैंडमली आप किसी को भी भेज दो एंड उसके बाद क्या करो जाके वहां पे कुछ भी बोल के चले आओ सो वी शुड हैव पर्टिकुलर दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन एक ट्रेन्ड स्पोक्स पर्सन होना चाहिए जो कि बोलते टाइम इस चीजों का ध्यान रखें गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ है एंड हाउ वी कैन क्रिएट अ सेफ इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क अपार्ट फ्रॉम दिस दे आल्सो सेड कि भैया जो सोशल मीडिया एक्सपोजर है जो सोशल मीडिया में चलने वाली चीजें हैं उन सबको ध्यान में रखे बिना हम इन्वेस्टिगेशन करें यस so police must include the rules for official social media handles prohibiting political content commentary on ongoing cases or debates with any individual so ये सब जो है वो इस टाइप के ऊपर रूल्स जो है ना वो बनाने की बात की गई है so that is what the police 3 month guideline police briefing media briefing के लिए जो guideline होनी चाहिए for now जो चीफ इलेक्शन कमीशन उनका कहना है कि no appeals filed after the PR SIR no election needed then around 3.26 crore UP voter could get a SIR hearing notice everywhere there is an SIR है ना हमारे यहाँ भी and other places में भी यूपी में भी so like close to 3.26 crore voters ऐसे होंगे जिन्हें hearing notice के लिए SIR के लिए बुलाया जाएगा ये कुछ ऐसा बोलना है उनका हाँ good news Mozambique right activist to get Indira Peace Prize so Indira Gandhi Peace Prize so what is जो Mozambique right activist है that is Gracia Machel है ना uh, she has been confirmed with the 2025 Indira Gandhi Peace Prize एंड इंटरनेशनल जूरी ने इन्हें सिलेक्ट किया हुआ है फॉर मैं पढ़ देता हूँ हर लाइफ लॉन्ग एडवोकेसी फॉर द ह्यूमैनिटेरियन कॉज एंड हर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द एजुकेशन हेल्थ ह्यूमन राइट्स राइट तो इन्होंने जो काम किया है उसके लिए जो रेसिपेंट हैं शी इज अ फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ मोजाम्बिक एंड द मेंबर्स ऑफ एल्डर्स जो वहाँ के लोकल उसमें अथॉरिटीज में आते हैं They recognized her as a freedom fighter and stateswoman, specifically for transforming the education system in the Mozambique. And recently announced हुआ है uh, every year there is a specific मतलब जनवरी के टाइम पे इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है उसको अवार्ड किया जाता है मतलब नॉमिनेशन जो है वो इंटरनेशनल ज्यूरी के पास आते हैं देन दे डिसाइड इट एंड देन दे अनाउंस इट दिस ईयर इट वाज द विनर है ना द विनर वाज ग्राशा मशेल जो मोजाम्बिक से थी शी वाज एन एजुकेशन मिनिस्टर एंड ये अनाउंस किया जाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के थ्रू मतलब ये जो प्राइज दिया जाता है गांधी पीस प्राइज इंदिरा गांधी पीस प्राइज दैट इज बीन गिवन बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट एंड डिबेट इस पे भी चल रही है पॉलिटिकल डिबेट्स आर गोइंग ऑन कि क्या ऐसा होना चाहिए ऐसे नहीं हो रहा तुम नहीं सोशल मीडिया फॉलो करते दैट्स कम्प्लीटली फाइन मैंने कई ऐसे ट्वीट देखे जहाँ पे ये बात निकली है कि क्या ऐसा होना चाहिए क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंदिरा गांधी के नाम पे होना चाहिए पीस प्राइज या नहीं बट ठीक है दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट वी अप्रिशिएट द वर्क ऑफ इंडिविजुअल जो कि हमारे लिए जरूरी है वी आर डूइंग इट फॉर करेक्ट पर्पस तो यहीं पे अपन इस डिस्कशन खत्म करते हैं जो एजुकेशन राइट एक्टिविस्ट है मुजामिक की फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर हैं शी इज बीइंग कंफर्म्ड विद इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2025 ठीक है अनाउंस हमेशा एक साल बाद होता है बट ठीक है हाँ जशन यूएस में उनका कहना है कि बिग एआई स्पेंडिंग डज नॉट गारंटी जियोपॉलिटिकल पावर एक स्टेटमेंट था मैं इस चीज से एग्री करूं नहीं करूं बट आई थिंक एआई इज समथिंग दैट इज हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ओके उसके अलावा रिपब्लिक डे परेड जो तवाली में होगा वहां पे वंदे मातरम फीचर किया जाएगा
ये एक गुड न्यूज़ है। हाँ, यहाँ पे कुछ आर्टिकल मेंशन करूँगा जिनको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एंड दिस इज़ फॉर इंग्लिश एंड लीगल पर्पस। मेक श्योर कि ये पढ़ना ज़रूर। लेट्स कम बैक टू द लाइक बिज़नेस न्यूज़। जियोपॉलिटिकल पॉलिटिकल टेंशन पॉइंट्स टू एलिवेट द रिस्क, पॉलिसी अनसर्टेनिटी। तो भैया बिज़नेस का भी रिस्क बढ़ेगा। ऑब्वियसली चाचा ट्रम्प जहां नहीं तहां उठ के चल देते हैं और बोलते हैं ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। सो वो प्रॉब्लम तो करेगा। लाइक देयर इज अ टेंशन बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड डोनाल्ड ट्रम्प, दैट यूएसए। यूरोपियन यूनियन की जो हेड है अर्सुला वन डेर, उन्होंने भी लास्ट पर्टिकुलर अपने उसमें यही बोला कि वी कैन नॉट हैंडल सच काइंड ऑफ बुलिंग। एंड जो वेस्ट है, जो यूरोप है, उसे अपना सिक्योरिटी कंसर्न, अपना जो ग्रोथ है, बीइंग लाइक अथॉरिटी जो है वो खुद से देखने की आदत होनी चाहिए। सो उन्होंने ये भी एक पर्टिकुलर बात बोली। तो यस, अभी अनसर्टेनिटी तो है। वन ऑफ माय फ्रेंड वाज लाइक, भाई बहुत जल्दी रिसेशन आने वाला है। अनदर बैड न्यूज, कल 91 क्रॉस कर गया हमारे रुपीस अगेंस्ट द यूएस डॉलर, एंड इट वाज वेरी बैड कंडीशन। बहुत कुछ। हाँ, तो ये सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से तो आ रही है। अर्सला मंडल का जो स्टेटमेंट है वो वहीं से तो आ रहा है। यार मैं कुछ न्यूज था जिसको अपन वो करने वाले थे। यस। सो हमारी प्यारी सुनीता विलियम्स, शी रिटायर्ड आफ्टर 27 years करियर इन द स्पेस, एंड शी वाज एन एस्ट्रोनॉट, जो कि लॉन्गेस्ट स्पेस में रहने का रिकॉर्ड जिन्होंने बनाया था। एंड जो एक्स पीएम थे जापानी शिंजो आबे, उनके असैसिनेशन के लिए जो गनमैन था उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट मिला। लेट्स कम। Trump calls for the immediate talks on the Greenland but rules out the use of force. US President return to Davos was marked by the hardline speech on his quite like quest to the acquire Arctic region for a national security. Macron's pitches for the NATO exercise in the territory, the blast and like acceptable tariff threat, और बहुत सारी चीजें। So what exactly is happening? अब कोई कह रहा था इकोनॉमिक फोरम की बात करेंगे। सो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, हाँ, वहां पे बहुत सारी चीजें हुई। सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग लाइक, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी, उनके स्पीच की डिस्कशन हुआ था। आई गेस यू वर एब्सेंट जब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। ही गेव अ वेरी फाइन स्पीच, दो केम लेट। मेरे को ऐसा लगता है 25-30 ईयर्स बाद आई है। पहले आ जाती तो बेहतर होता। बट किसी भी पर्टिकुलर ऐसे कंट्री की तरफ से विच वाज वेरी क्लोज अलाइड टू यूएस, ऐसा स्पीच आना, इट्स अ गुड थिंग। सेकंड, एनीवन, है ना, फ्रॉम द नेटो, फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, अगर मैं बात करूं, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ द एक्शन फ्रॉम द ट्रम्प against the Greenland. So whether that is Carney, whether that is the British President Starmer हो, या Macron हो जो French President है, British Prime Minister, sorry, they are not at all happy, and there are people who strictly saying कि we are not going to accept this kind of bullying. अभी after this sort of tension, Donald Trump's called for immediate talks on Greenland but rules out the use of force. यस, कि भैया नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है देख लेते हैं, बिकॉज नेटो इज समथिंग जो कि इसके बाद नहीं रह जाएगा। द डिबेट इज, NATO is an alliance in which if there is an attack on one country, the entire NATO group is going to attack that on that particular country, against that particular country, right? So if a NATO nation is attacking a NATO nation, what they are going to? That's the question rising. Let's hope for the best that they actually get into a common particular solution so that problem ना हो। बट ट्रम्प का जो बिहेवियर है दैट इज अगेन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। मतलब भाई वहां से निकला है, और वहां से निकलने के बाद भी उसने सेम बोला है, आई टेल यू द स्टेटमेंट, है ना, कि इट्स अ यूनाइटेड स्टेट्स अलोन दैट कैन, इट्स द यूनाइटेड स्टेट्स अलोन दैट कैन प्रोटेक्ट द जायंट लैंड मास, दिस जायंट पीस ऑफ आइस। उसके बाद कहता है दैट्स द रीजन आई एम सीकिंग इमीडिएट नेगोशिएशन
to once again discuss acquisition of Greenland by the United States. Right? Denmark has a choice. तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है कि भाई ये चीज नहीं होना चाहिए. यू कैन से यस एंड वी वेरी अप्रिशिएटिव, और यू कैन से नो एंड वी विल रिमेंबर अ स्ट्रॉन्ग सिक्योर अमेरिका मींस स्ट्रॉन्ग नेटो. तो भाई एक साइड बोल रहा है कि चलो बैठ के बात करते हो, दूसरी साइड जो है वो धमकी भी दे रहा है. तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है इंग्लैंड के केस में. ओके, इसको पढ़ लेना, है ना. ये एक अच्छा वो था आर्टिकल. देन भैया कल के मैच, आई एम श्योर तुमने मैच देखे, नहीं देखे, नहीं देखे तो कोई बात नहीं. कल के मैच में जो धमाकेदार कार्यक्रम हुआ, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार, सूर्या बाऊ, दे डिड अ ग्रेट जॉब. कल का मैच काफी मजेदार था, तो मैंने देखा. ओके, सो लेट्स गेट इनटू आवर फाइनल सेगमेंट, दैट इज क्वेश्चन आंसर सेक्शन. रेडी गाइस? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, तब तक आई विल हैव सम वाटर. So let's start with our question answer segment. Let's go for question number one. The Supreme Court recently stated that an election commission power during the special intensive revision of electoral rules are option A, absolute and beyond judicial review, subject only to parliamentary approval, wide out, but not unregulated, limited to the summary revision only. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए कि वो पावर को किस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया. Everyone, not come on. They said कि yes, you have enough power, but you are supposed to be regulated. You are supposed to be answerable, ना. तो उनको एब्सोल्यूट पावर और बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू के तो कैंसिल कर दिया था. पार्लियामेंट्री अप्रूवल नो, एंड लिमिटेड समरी रिवीजन ओनली नो. They said कि you can do an SIR, it's under your power, but it is not like unregulated or absolute. चलो next. The constitutional article that empowers the Election Commission of India to conduct election and revise the electoral law. So कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो इलेक्शन कमीशन को अथॉरिटी देता है इलेक्शन कराने की और इलेक्टोरल रूल रिवाइज करने की? ऑप्शंस आर आर्टिकल 320, 324, 326, 329. आई नीड अ करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, क्योंकि इस पे हम बहुत लंबा थोड़ा डिस्कशन कर चुके हैं. कम ऑन. यस, एवरीबडी करेक्ट, 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 दैट इज बी. आर्टिकल 324. आई एम नॉट श्योर, जितने टाइम से अपन डिस्कशन कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन SIR, आई एम नॉट लाइक, मुझे याद नहीं कि कौन से ऐसे दिन है जब मैंने आर्टिकल 324 की बात नहीं करी है. ठीक है, मूविंग ऑन to next. Supreme Court recently stayed on the judgment regarding the definition of a which ecological sensitive region. अब ये तो बता दो, ऑप्शंस आर वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, अरावली रेंज, नीलगिरी हिल्स. कम ऑन. दैट इज इजी. अरावली रेंज डेफिनेशन वाला पार्ट वही आया था. राइट, देयर आर प्लेसेस जहाँ पे अलग अलग तरीके से इन्होंने कुछ कुछ इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए वो किया, बट डेफिनेशन के लिए पार्ट सबसे पहले कहाँ पे आया था? अपने अरावली रेंज के लिए. Moving on to the next one, which body recommended long-term measures to curb air pollution in Delhi NCR, including the vehicular emission control? इनमें से कौन सी बॉडी जो है वो लॉन्ग टर्म मेजर के लिए उन्होंने
दिल्ली पोल्यूशन के लिए बात की है। ऑप्शन है नीति आयोग, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। दिस इज एन इजी वन, आई होप तुम प्रॉपर इसको आंसर करो। वेरी करेक्ट रिस्पॉन्ड, आई वेरी करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इन्होंने ही रिसेंटली इस बारे में बात की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इंदिरा गांधी पीस प्राइज प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2025 वाज अवार्डेड टू। किसको मिला इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2025 का? मलाला यूसुफजई, गासा मशेल, मिशेल बेचलेट या नादिया मुराद? अबे अब भी डिस्कशन किया है तो तुम आंसर तो करेक्ट करो। जीनस गाइस, क्या कर रहा है? दैट इज गासा मशेल ना? अभी अपने डिस्कशन किया है, मोजाम्बिक की एजुकेशन मिनिस्टर थी। ठीक है, चलो। विच Act replaces the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act मनरेगा in 2025? इनमें से कौन सा एक्ट मनरेगा को रिप्लेस करेगा? ऑप्शन आर विकसित भारत रोजगार मिशन एक्ट, ग्रामीण आजीविका सुरक्षा एक्ट, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट, नेशनल रूरल लाइवलीहुड एक्ट। अच्छा, 2025, 2024 ना, अभी अपन अब इसकी बात कर रहे हैं ना, 2025 की। यस, वेरी करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज सी। चलो, मूविंग ऑन। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली distinguished between the irrational freebies and welfare scheme by stating that the welfare schemes are राइट। वेलफेयर स्कीम जो है वो क्या होती हैं, उनको किस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया? कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक गुड और अलाउड ओनली ड्यूरिंग द इलेक्शन। ये तो बहुत इजी पड़ेगा तुम्हारे लिए। यस, द करेक्ट आंसर इज इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक गुड। वेरी करेक्ट। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पॉलिटिकल पार्टी लीडर टीटीवी Dinakaran rejoined the AIDMK led NDA ahead of a Tamil Nadu election. So किस पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जो दिनकरन है, उन्होंने AIDMK लेड एनडीए को ज्वाइन करने का रीज्वाइन करने का डिसीजन लिया? PMDK, AMMK, PMK, MNM? बताओ। द करेक्ट आंसर इज AMMK। हाँ, ये न्यूज थी। अभी शायद स्किप कर दी थी, बट ही वाज पार्ट ऑफ इट एंड देन अगेन रीजॉइन द लाइक व्हाट वी कैन से एनडीए अगेन। सो ये तो चलता रहता है। Which Indian state approved the bill of designated certain areas as disturbed area to prevent the distressed sale of property? किस स्टेट ये लॉ निकाला है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश? बताओ। सी। हरीश पन्ना, राजस्थान ने अभी रिसेंटली वो किया ना,
गुजरात ने पहले कर लिया था, राजस्थान ने अभी वो किया है। चले, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस रिप्लेस्ड विच कॉलोनियल एरा क्रिमिनल लॉ? बीएनएस ने किस पर्टिकुलर लॉ को रिप्लेस किया है? ऑप्शंस आर इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दैट इज सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और पुलिस एक्ट। बताओ। ये तो इजी है तुम्हारे लिए। जल्दी। वेरी करेक्ट। ए आईपीसी। आईपीसी को रिप्लेस करके बीएनएस बनाया गया। अकॉर्डिंग टू कर्नाटका हाई कोर्ट, सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस क्रिमिनलाइजेस, राइट, जो वो है कर्नाटका हाई कोर्ट, उन्होंने किस पर्टिकुलर, सॉरी, सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस जो है उसको क्रिमिनलाइज करने की बात करें। ऑप्शंस आर ऑल लिव इन रिलेशनशिप्स, breach of promise to marry, sexual intercourse by deceitful means, adultery। बताओ। Very correct, sexual intercourse by deceitful means, right? Good, good। India is considering joining the US-led board of peace related to which conflict region? किस रीजन के कॉन्फ्लिक्टेड बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने के लिए इंडिया कंसिडर कर रहा है, which was led by US? It's a very easy question। यूक्रेन, ताइवान, गाजा, साउथ चाइना सी। गाजा। यस, ऑब्वियसली। चलो। The Commission for Air Quality Management (CQM) primarily addresses the pollution of which region? Mumbai Metropolitan, Indo-Gangetic, Delhi NCR, Eastern India। हाँ, ज्वाइन करने के लिए $1 बिलियन भी दो। अबे बोर्ड ऑफ पीस है वो, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं चल रहा। खैर, मतलब क्या ही बोलूं, मैं उस चाचा ट्रम्प को समझ नहीं पा रहा हूँ। या इट्स इजी टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी, बट ट्रम्प को समझना उससे भी मुश्किल हो रहा है। Correct answer, Delhi NCR। Very good, guys. Moving on to the next one. Which global forum hosted several Indian chief ministers and corporate investment discussion in early 2026? कौन सा इन्वेस्टमेंट ग्लोबल फोरम है जिन्होंने चीफ मिनिस्टर्स को और इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट वो किया, बुलाया, होस्ट किया? ऑप्शन है G20 समिट, ब्रिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस या यूएन जनरल असेंबली। Correct, the World Economic Forum। Last question for today. The Supreme Court recently directed states to frame a policy on police media briefing based on which manual prepared by, राइट? सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टेट्स को डायरेक्ट किया है कि पुलिस पुलिस के लिए मीडिया ब्रीफिंग के एक मैनुअल प्रिपेयर करो जो कि किस मैनुअल से इंस्पायर होना चाहिए? नेशनल पुलिस एकेडमी, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, एमिकस कोरिया या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? ये भी बहुत इजी है यार। द करेक्ट आंसर इज एमिकस कोरिया। वेरी गुड। सो उन्हीं का मैनुअल जो था उसी का डिस्कशन अपन ने किया था कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए रेफरेंस में। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, राइट? back and let's hope that we will continue uh, थोड़े से like 4 6 दिन बाद I'll make another like 2 3 days uh, of a leave, but for that we are regular, so don't worry about it, right? And this is it from my side for today. I'll see you in the next session. Till then, have a great day ahead, मजे करो, लाइफ में मस्त रहो।
पढ़ाई में व्यस्त रहो. See you guys. Good night. Thank you, Daksh. Good day. Oh, you scored 22 in the current affairs mock. Let's score more. ठीक है? So all the best for coming mocks.